कुसुम.net में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पार्ट 26 स्टोर प्रोसीजर इन एमवीसी पार्ट 3। तो आज हम सीखेंगे इस पार्ट में हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, हाउ टू एक्सेस स्टोर प्रोसीजर यूजिंग डेटा एंटिटी मॉडल एंड यूज ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर इन एमवीसी। एसक्यूएल पैरामीटर का यूज कैसे किया जाए। तो अगले दो पार्ट में हमने डेटा इंसर्ट कैसे किया जाए और डेटा डिस्प्ले कैसे किया जाए ये देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर ईच रो का हमें रिक्वायरमेंट है तो ईच रो हमें डिस्प्ले करवानी है तो कैसे करें और उसे अपडेट करना है तो कैसे करें। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो देखने से पहले मेरे पहले के पार्ट 23, 24 और 25 जरूर से देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। और ये लास्ट टाइम हमने इंसर्ट किया था डेटा इस कोड के जरिए। ओके, तो आज हमें डिटेल्स फैच करनी है पर्टिकुलर रो की। तो उसके लिए मैं स्टोर प्रोसीजर लिखूंगा, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर। ओके, एंड डिलीट इट, राइट, क्रिएट प्रोसीजर, and procedure name sp detail by id, sp detail by id. Okay, and now what we will write? So we need data using id। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, @id इंटीजर का पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेगा। मैं ये नेम चेंज कर देता हूँ, sp get login data, so get login by id, राइट। तो @id इंटीजर मैंने पैरामीटर पास किया s, and then we will use a code to fetch the data. For that, select star from login table where id equal to @id, राइट, @id। तो ये मेरा कोड है। अपडेट करते हैं। ओके, ये मेरा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है और मैं इसके ऊपर रिफ्रेश मार के देख लेता हूँ। sp get login by id क्रिएट हुआ है कि नहीं, हो गया है। ओके, ठीक है। तो मुझे अभी डेटा एंटिटी मॉडल में जाना है, राइट, मॉडल, डेटा एंटिटी मॉडल, और राइट क्लिक मार के इसे अपडेट करना है। ऐड स्टोर प्रोसीजर गेट लॉगिन बाय आईडी, राइट, फिनिश, and right click model browser, in the function imports get login by id, right click on this, edit, and add the entities of login table, right, so that login table and the store procedure will be included. Now build the program. Go to the controller side and to access the row detail inside of the detail method. Okay, this detail method we will pass the code. Okay, so I have passed integer id and will write here the code.
SQL parameter param1, okay, equal to new SQL parameter, and inside of that I will pass the ID. Okay, so @ID, use the same characters name as per your column of the table, and ID which you have passed here small, so small ID parameter, right? Now create variable data equal to db database, access your data of each row using this db object, db.database.sql query from login table by executing the store procedure. So execute name of the store procedure sp get login id, sp get login id @id, okay, and pass this parameter param1, so param1, okay, and you need a single row, so dot single or default, right, dot single or default, and return view this variable here, so that row will be executed here. So let's check it and run it. तो करते हैं डिटेल्स पे क्लिक और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक एरर आ रही है, सिंगल और डिफॉल्ट व्यू डिटेल्स कुड नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर एसपी गेट लॉगिन आईडी। मुझे लगता है इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्पेलिंग है। एसपी अंडरस्कोर गेट लॉगिन बाय आईडी, राइट, गेट लॉगिन बाय आईडी, सो बाय लगाना हमें रह गया। view is not found, okay, so because we have not created a view, so we first create the view. So right click on this details and create the view. For that, close this debugging and add view details template model class login tables, and this store procedure db entities too. It's okay. Click on add. Click on this detail. You can see the details of the row can be fetched. Details, okay, you can see the data like this. Now we have to edit the data. So to edit the data, what we need, when we click on the edit button, first it will show the particular row and where you want to edit the data. So first you want to display the row, okay, for that you need this same code, okay, of the data details. So to fetch row, inside of this edit method, so you can fetch the row, okay. So I have added this here and passed the data to return the view. So click on this and run the program now again. We have not created the edit view, okay, so it displays error when we click on edit. So first go to this controller side and right click on this edit, and first stop the debugging, right click on edit and add view, okay, add view, edit, use the edit template and model class same login tables,
So login, store procedure, and this one same, add. Okay, now we will run the program and let's check it. Right, now click on edit, so you can access with text box. Okay, with text box, so that you can edit. But to edit, we press on save button, and we have to add postcode data for edit, and we have to do that in the controller. Okay, so let's go to the controller side and add the data for edit to save the changes. Okay, so now we have to write the edit code, and for that edit code we first make the store procedure, and we have no time to do this. So in the next lecture we will see how to edit the data. Okay, in this lecture we have see how to fetch the row data for each row, okay, using store procedure. In the next lecture we will see that how to fetch the how to edit the data and how to delete the data. Right, thank you. uh, so this is the end of my video session. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।